मेरे पास आओ मेरे लाडलो चलो पढ़ाई करे. Yes, I think I am live and we are all set to start our class today. Let me know if you all can see me. Just give me a thumbs up if you all can see me. As you all know, we are going to start with a chapter today. The name of the chapter which we are going to do is remainder and factor theorem. It is believed that this is one of the easiest chapter in class 10 ICSE maths, right? And name of the chapter is remainder and factor theorem. Whenever we come across an easy chapter, जब भी हमको लगेगा कि कोई चैप्टर easy है, तो what we have to do and we have to see is that कि उस चैप्टर में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके. ओके, बिकॉज लेटर ऑन वी आर गोइंग टू हैव अ डिफिकल्ट चैप्टर. तो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई डिफिकल्ट चैप्टर स्टार्ट करूं इसके बाद, तो प्लीज राइट इन अ कमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन राइट your comments in the comment box also, and right now the chat box is open for you all. You can keep your chat coming in the chat box, right? Yes, let me check your chats. Okay, yes, good evening to everyone. Good evening to everyone. Right, so here we are going with chapter remainder and factor theorem. Now, this chapter, as most of the students find this chapter very easy, so we can divide this chapter into two parts. One is the factor theorem and another one is the remainder theorem, right? So what I am going to do is that I am going to solve 4 questions from factor theorem and 4 questions from the remainder theorem. Believe me, there is not much variety of the questions in this chapter, and if you do only these 8 questions, and even if you do more questions, all the other questions will be of same type. We are covering here all the different kinds of problems which fall in this chapter, which is called remainder and factor theorem. So here we go. Okay, but before we start actually solving question number 1, I like to give you explanation of this chapter कि ये chapter है क्या, इसमें हमको पढ़ना क्या है. So I'll start with a very basic thing which you all know, so that you can understand everything easily, right? Suppose there is a number. Okay, let me take a number 30, right? 30, correct. Now what are the factors of this number 30? As I told you, I'll start from a scratch as if you are studying in class, say 5th or class 6th. If you find out factors of 30, so 2 into 15 is 30, right? Then 3 into 5 is 15 and 5 into 1 is 15. So I can definitely say that factors of 30 is, factors are 2 into 3 into 5. Okay, so 2, 3, 5 are the factors of this number. और भी दो factor है, one is factor of all the numbers as well as number itself 30. तो वो दो वाले, one and last वाला number मैं नहीं ले रहा. Okay, राइट. सो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड व्हाट इफ इसमें से कोई भी नंबर मैं सिलेक्ट करता हूं, लेट अस से 30 इज माय नंबर जिसके ये 3 फैक्टर है. आई टेक, लेट अस से आई हैव टेकन 3, and if I divide this 30 by 3, 3 into 10 is 30, my remainder is 0, isn't it? यही है फैक्टर और रिमाइंडर थियरम. ओके, सपोज इफ आई टेक 30 और इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 या 5 से, 5 into 6 is 30, स्टिल यू गेट अ रिमाइंडर 0. तो इसके सम्स, इस चैप्टर के सम्स करने से पहले आपको एक चीज समझनी है, दैट इज नंबर हैव वेरियस फैक्टर्स. ओके, और इसके फैक्टर से, जो भी फैक्टर्स है नंबर के, if you use that factor to divide a given number, then your remainder is 0, right? फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यू गेट रिमाइंडर एज 0. एंड वाइसी वर्सा, उसका उल्टा है, ये है कि अगर
अगर मैं 30 को किसी नंबर से डिवाइड करता हूं और अगर मुझे रिमाइंडर 0 आता है तो ये नंबर जो है दैट इज अ फैक्टर. ओके, फैक्टर. तो इसी को कहते हैं फैक्टर थियरम कि इफ यू गेट ओके अगर ये नंबर जो है ये नंबर अगर डिवाइड करने के बाद में यू गेट रिमाइंडर एज 0, remainder as 0, then this number is a factor of a given number. समझ में आ रहा है? Then that number is a factor of a given number. Okay, so that is a factor theorem. और आप कैसे पता लगाओगे कि ये नंबर उसका फैक्टर है कि नहीं है? तो आपको रिमाइंडर बता देगा. If remainder is 0, then this number is a factor of a given number. And if remainder is not equal to 0, then it is not a factor theorem. तो जब हम रिमाइंडर को लेकर कुछ बातें करते हैं तो दैट थियरम इज अ रिमाइंडर थियरम. और जब हम फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो देन दैट इज अ फैक्टर थियरम. I know that some of you might be confused. Okay, so don't worry at all. Don't worry at all. I'll take an example and I'll clear all your doubts. Right? All your doubts will be cleared. Okay. जरा एक दो सम्स होने दो, then you will find that this chapter is very very easy. And if you already have done this, तो आपको जो है ये बहुत इजी लगने वाला है. ओके, एंड ऑल्सो टू डू दिस चैप्टर यू मस्ट नो दिस वन थियरम. ओके, वन फॉर्मूला दैट इज डिविडेंड. आई एम श्योर आप सब लोग इस फॉर्मूले को तो जानते ही हो. डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस व्हाट? प्लस रिमाइंडर. प्लस व्हाट? प्लस रिमाइंडर. राइट, ये फॉर्मूला तो मालूम है आप लोगों को. Later on there will be this formula also we require before we start solving this sum. Okay, तो चलो देखते हैं. I have given you example of number 30. मैंने example लिया था and we have taken factors of 30. Correct. अब हम क्या करेंगे? अभी हमको पॉलिनोमियल से डील करना है. ओके, पॉलिनोमियल्स. दिस चैप्टर इज देयर फॉर सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड. लेकिन वो लोग इसको फैक्टर रिमाइंडर थियरम नहीं कहते हैं, वो लोग इस चैप्टर को कहते हैं पॉलिनोमियल्स. राइट, पॉलिनोमियल्स. सो ये हमारा पॉलिनोमियल है. गिवन पॉलिनोमियल is f of x and this given polynomial is of degree 3, x cube minus 4x square plus 16x minus 64. Now students, I'm not at all going to hurry up. Okay, कि ये फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, हम आराम से जाते हैं so that every one of you understand. Right, every one of you understand. तो ये एक पॉलिनोमियल है. Right, understand, this is a polynomial. And the highest degree of this polynomial, okay, highest degree of this polynomial is 3. Highest degree of this polynomial is 3. तो डेफिनेटली जब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करोगे, तो यू विल गेट 3 फैक्टर्स. ओके, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, इफ यू हैव ऑलरेडी डन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन यू नो दैट अगर हाईएस्ट फैक्टर 2 होगा सो देयर विल बी 2 फैक्टर्स. हाईएस्ट फैक्टर 3 होगा, हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होगा देन देयर विल बी 3 फैक्टर्स. ओके, हाईएस्ट डिग्री 4 होगा तो देन देयर विल बी 4 फैक्टर्स. ओके, for this particular sum highest degree is 3, so we are going to have 3 factors. Right, anyway या क्वेश्चन में जो पूछा है वही हम लोग करेंगे, but additional information if I want to give so that this concept becomes clear to you, तो बीच बीच में वो बातें मैं आपको बताते रहूंगा. ओके, f of x is this. ओके, so this is what? ओके, ये बड़ा वाला जो फैक्टर होता है वो डिविडेंड है. डिविडेंड मतलब डिवाइड होने वाला. ओके, जो डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. डिविडेंड. और डिवाइड करने वाला होता है डिवाइजर. दिस पार्ट इज कोशेंट और लास्ट में जो बचता है आप लोगों का दैट इज द रिमाइंडर. सो f of x is your dividend, g of x is your divisor. इट इज योर डिवाइजर. ये डिवाइड होने वाला है, ये डिवाइड करने वाला है. ओके, तो आगे क्या करना है? व्हाट इज अ क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x. मतलब ये डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं है. लेट मी गो बैक टू माय प्रीवियस एग्जांपल. अगर मैं पूछूंगा 30, ओके 30, क्या 4 जो है वो फैक्टर है 30 का? तो आई एम श्योर आंसर इज नो.
क्योंकि 4 के टेबल में, ओके 4 के टेबल में व्हाट डू यू गेट, 4 into 7 is what, 28, remainder is what, 2. when you get and further to divide it further, आगे इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, आगे इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है ओके राइट. सो रिमाइंडर इज 2. जब भी आपको रिमाइंडर आएगा अदर देन जीरो, वेन एवर यू गेट अ रिमाइंडर अदर देन जीरो, तो वो वाला टर्म फैक्टर नहीं होगा, नॉट अ फैक्टर. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल 30. क्या 3 इसका फैक्टर है? डेफिनेटली यस. ओके 3 into 10 is 30. तो फैक्टर होगा तो योर रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0. और अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर इज एनीथिंग बट 0. ओके तो क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये हमको पता चलेगा रिमाइंडर से. हाउ डू वी फाइंड आउट रिमाइंडर नाउ? तो क्या एक्चुअल डिवीजन करना है? तो आंसर इज नो. ओके एक्चुअल डिवीजन भी कर सकते हैं, इन दोनों का एक्चुअल डिवीजन भी कर सकते हैं. ओके द मेथड इज कॉल्ड एक्चुअल डिवीजन. अगर आप लोग सेलिना का बुक टेक्स्ट बुक यूज करते हो तो सेलिना के टेक्स्ट बुक में रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए एक नया मेथड दिया है which is called a synthetic division. If you want synthetic division, you can write in the comment box. Yes. Okay, unknown guy, what is the marks weightage? Lavanya Nandakumar, good evening. Yes, good evening. Elon Musk, butterfly. Okay. Diya Gaude. Okay, good evening to all of you. Yes, good evening. ओके आई टेल यू अबाउट द वेटेज. ओके वेटेज बताता हूं मैं. ये जो चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आएगा. ओके एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आएगा. ओके एंड द वेटेज कैन बी आइदर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स. ओके जनरली 5 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, ये 4 मार्क्स के लिए आएगा. ओके एंड ये क्वेश्चन जो इट कैन बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन और द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑल्सो. अगर लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन अगर पेपर अगर आप लोग देखोगे लास्ट 5 इयर्स PYQ, ओके लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन, तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो है वो क्वेश्चन आया है. ओके क्वेश्चन आया है. ओके तो आई विल सी दैट, आई विल टेल यू जब हम लोग पहुंचेंगे. लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. दोज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस which are generally asked in the examination. So you can expect weightage for this chapter will be okay, will be 4 marks, will be 4 marks. Let me complete this. Okay will be what, 4 marks. Okay this particular chapter easy chapter है, समझ लो 4 marks आपके जेब में, right? And g of x, okay g of x which is divisor, that is equal to x minus 4. तो x minus 4 okay ये डिवाइजर है और ये क्या ये इसका फैक्टर है? ओके सो वी आर गोइंग टू यूज अ रिमाइंडर थियरम टू फाइंड अ रिमाइंडर. ओके व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये देखो ऐसा स्टार्ट करना है, एग्जाम में आप लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे. ओके लेट डिवाइजर इज इक्वल टू 0, लेट कॉमा डिवाइजर इज इक्वल टू 0. डिवाइजर मीन्स व्हाट? okay divisor is what, x minus 4 is equal to 0, therefore x is equal to 4. value of x we got as 4. look here ये dividend है. okay तो when I write f of 4, लुक एट दिस इक्वेशन, जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4. तो जहां पर x दिखाई दे रहा है पुट अप 4. तो f ऑफ x मींस f ऑफ 4 इज इक्वल टू व्हाट, 4 क्यूब माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर. प्लीज अटेंड द क्लास विद योर नोटबुक एंड पेन एंड सॉल्व अलोंग विथ मी. प्लस 16 इंटू 4 माइनस 64. ओके और ये जो है ओके दिस टर्म, रिमेंबर दिस टर्म इज कॉल्ड रिमाइंडर f of 4. okay this is polynomial. f of x is a polynomial in variable x. try to understand the language. f of x को बोलते हैं polynomial in variable x. एंड जब x में हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं ओके डिवाइजर को 0 लेकर x का वैल्यू लेते हैं and when we substitute the value okay we call it as a remainder. okay therefore remainder, this is remainder theorem which I am using. therefore remainder is equal to what, 4 cube, isn't it 64? now 4 into 4 square, 4 square is 16 and 16 into 4 is 64.
plus 16 into 4 is what? 64 and minus 64. So plus 64 minus 64 plus 64 minus 64 is 0. What am I getting? My remainder is 0. My remainder is 0. So I will write therefore x minus 4 is a factor. Okay, here I have given you explanation कि अगर remainder 0 आएगा then it is a factor. अगर remainder 0 नहीं आया then it is not a factor. So since remainder is 0, I'll say that x minus 4. This is a question. Find out g of x. Okay, or else what you can write, therefore g of x is a factor of f of x. ठीक है, g of x is a factor of f of x. ओके अगर ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में टू फाइंड वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट, तो इसके लिए वेटेज कैन बी 3 मार्क्स. ओके वेटेज कैन बी 3 मार्क्स. तो ये 4 मार्क्स का नहीं होगा. ओके सो वेटेज विल बी 3 मार्क्स. एक बड़ा सम है जो जनरली पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूअसली पूछ रहे. ओके सो दैट Yes, Dishita Joshi, good evening. Harshita Sharma, good evening. Shlok Shetty, good evening. Rajvi, good evening. Okay, Elon Musk, good evening. Have you understood that this? If yes, then we can continue. If yes, then we can continue. We can go for the next sum. Okay. जब आप लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ रिमाइंडर थियरम. ओके और जब फैक्टर के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर थियरम. राइट. So let us continue. This was question number 1. We will head towards second question. Okay, now see here, find the value of k. We have to find the value of k. देखो ये k is the unknown term. Now my polynomial in variable x, okay, f of x is what? X cube, fine, minus 3x square, okay, minus x, and instead of a constant I have a k. और मुझे इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड लुक एट दिस स्टेटमेंट. यहाँ क्लियरली दिया है कि g of x is equal to x minus 3. g of x means what? Divisor is a factor of f of x. It is a factor of f of x. ये ऑलरेडी हमको पता है कि ये फैक्टर है. अगर ये फैक्टर है तो लेट मी नो. अगर ये फैक्टर है तो लेट मी नो क्या व्हाट इन्फरेंस यू ड्रॉ. तो आप लोग क्या बोलेंगे? आपको मालूम है g ऑफ x जो है वो f ऑफ x का फैक्टर है. पिछले बार देखो. ओके लुक हियर. यहाँ पर देखो. ओके आई सेड g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x. मैंने क्या कहा कि g ऑफ x जो है डिवाइजर है जो है वो डिविडेंड का फैक्टर है. g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x. कब बोला मैंने? कब बोला? तो यार इट वाज माय एक्सप्लेनेशन. अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा. रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा. तो यार रिमाइंडर इज 0 सो इट वाज अ फैक्टर. तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x. तो हम लोग क्या बोलेंगे? यस हम बोलेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. व्हाट आर वी गोइंग टू से? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. राइट. ये बात याद रखना. ओके as usual we will start like this. As usual we are going to start like this. Let divisor is equal to 0. Let divisor is equal to 0. Divisor कौन है? तो x minus 3. X minus 3 is equal to 0. Therefore what is value of x? Therefore value of x is equal to 3. Right. अब remainder means what? ओके एफ ऑफ एक्स. जैसे ही मैं 3 सब्सटीट्यूट करूंगा f में, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. ओके ये क्या है? तो इसी को कहते हैं रिमाइंडर. तो इसी को क्या कहते हैं? रिमाइंडर. करेक्ट. ये क्या है? रिमाइंडर एफ ऑफ एक्स. ओके दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. बट अगर आप लोग एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट मी मेक अ स्टेटमेंट हियर. लेट मी मेक अ स्टेटमेंट हियर. And what is that statement? कि f of x is a factor. Sorry, g of x is a factor of f of x. Therefore remainder is 0. अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर होगा. एंड वाइस वर्सा. g of x is a factor, then remainder is 0.
Therefore f of 3, x का वैल्यू क्या है 3, okay, this is remainder is equal to 0. Now look at the polynomial, जहां जहां x दिखाई दे रहा है we will substitute 3. So 3 का क्यूब minus 3 into 3 square minus 3 plus k is equal to 0. Look at this equation. Look at this equation carefully. One equation, one variable. We can easily solve this. 3 का cube is 27. Okay, 3 का square is 9 into 3 is 27 minus 3 plus k is equal to 0. Plus 27 minus 27 cancel क्योंकि 27 minus 27 आता है 0. And minus 3 goes that side and you get k is equal to 3. तो पूछा है what is value of k? So k का value है 3, right? Is it fine? Is it fine? Are you getting it? Yes, yes. Let's move on. What must be added to this polynomial? Okay, same sum. Okay, कॉन्सेप्ट तो सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं. ओके, तो आई एम ट्राइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस. इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट मेक श्योर दैट एक एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट? इसमें क्या ऐड करेंगे? ओके, टू ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3. अब गिवन पॉलिनोमियल जो है वो x माइनस 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यू हैव टू टेल कि इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग. ओके, व्हाट इज अ थिंग दैट वी आर गोइंग टू ऐड जिससे कि ये जो है ये पॉलिनोमियल विल बी डिविजिबल बाय x माइनस 3. तो नाउ गिवन फॉर्मेट इज नॉट डिविजिबल बाय दिस. ओके, सो व्हाट मस्ट बी एडेड? सो आई एम सेइंग दैट लेट k मस्ट बी एडेड. लेट क्या ऐड करेंगे हम लोग? k मस्ट बी एडेड. नाउ लुक हियर, व्हाट इज f ऑफ x? व्हाट इज f ऑफ x? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, इसमें ऐड करेंगे k. ओके, व्हाट आर वी एडिंग हियर? वी आर एडिंग k, राइट? वी आर एडिंग k. ठीक है, ये k ऐड कर रहे हैं नाउ. ओके, ये तो डिविजिबल नहीं था, लेकिन k ऐड करने से क्या हो गया? ये डिवाइजर. ओके, x माइनस 3 नाउ इट इज डिविजिबल. ओके, k ऐड करने से क्या होगा? ये ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा. इट विल डिवाइड इट कंप्लीटली. ओके, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. ठीक है, तो हाउ डू आई स्टार्ट? आई विल से लेट डिवाइजर. Okay, second time in this sum I am using this word divisor. Let divisor is equal to 0. Therefore x minus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to 3. Correct? Now come back to our equation. Okay, मैं find out करूंगा remainder. Okay, remainder 0 ये है. Now k must be added. k add करने के बाद में. Okay, now I will write g of x. Okay, k add किया तो g of x exactly divisible by is, sorry, f of x. Why am I writing this? Okay, f of x is exactly divisible by g of x. ठीक है, k ऐड करने के बाद में वो डिवाइड हो रहा है, राइट? देयरफॉर रिमाइंडर इज 0. Okay, when it is exactly divisible, remainder is 0. Remainder 0 means what? F का value substitute कर दो, f of 3 is equal to 0. Now look at f of x. f of x के पास देखो, जहां जहां पर आपको k दिखाई दे रहा है, substitute it as 3 because x is equal to 3. So what am I getting? 3 का cube minus 6 into 3 square plus 11 into 3 minus 8 plus k is equal to 0, right? Just like previous sum, question पूछने का तरीका अलग है. This is what? 27. 9 into 6 is 54 plus 33 minus 8 plus k is equal to 0. One variable, one equation. Now we are about to get the answer. 27 माइनस 54, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यू गेट माइनस 27. एंड 33 माइनस 8 प्लस 33 माइनस 8 is plus 25, isn't it? Yes, 25 plus 8 is 33.
plus k is equal to 0. Minus 25 minus 27 plus 25 is minus 2 plus k is equal to 0. Therefore, k is equal to 2. Okay, but question is asking us what must be added. Okay, what must be added? So my answer is 2 must be added. Okay, 2 must be added. 2 must be added. Right? I'll bring this page to a full screen. You can go through this. Anyway, if you have any doubt, let me know. Yes, some of the students have already got the answer. Dishita Joshi is saying let number added be k. Yes, definitely. You can use k or m, any variable, okay, any variable other than x, क्योंकि x already use किया. Okay, Elon Musk -2. No, it is 2, not -2. Diya Gaude, k is equal to 2. Okay, Elon has corrected his mistake. Shlok Shetty, very good. K is equal to 2, right? Chalo, we'll try to solve as many questions as possible. So let us move on to next question, this one, right? We will move on to this question. Find the value. Okay, now this is important question. You can expect this question in your examination. Okay, in your examination. Find the value of constant A and B. फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी. हमको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमको बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, नाइन्थ में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, वन इज ए एंड अदर वन इज बी. तो दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको चाहिए टू इक्वेशंस, राइट? वी वांट टू इक्वेशंस. ठीक है. इफ x -2 and x + 3 and both factors of the expression, it must be are both the factors, are both factors of the expression. Fine. मतलब ये जो है f of x, our f of x is x cube plus ax square plus bx minus 12. Okay, इसके लिए दो डिवाइजर है, दो टू डिवाइजर्स विल डिवाइड दिस कंप्लीटली. ओके, मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था आप लोगों को क्यूब. क्यूब मीन्स व्हाट? 3. तो इसके 3 फैक्टर होंगे. देयर विल बी 3 फैक्टर्स. हाउ डू आई नो देयर आर 3 फैक्टर्स? क्योंकि ओके, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस वेरिएबल इज 3. तो दो फैक्टर उन्होंने ऑलरेडी दिए है. x -2, वी नो फर्स्ट फैक्टर x -2. सेकेंड फैक्टर इज x + 3. And they are asking us, okay, find the value of a and b. Okay, in some question they may ask you this factor also. आगे चलकर हम लोग सॉल्व करेंगे इसका थर्ड फैक्टर, बट आई डोंट थिंक सो इट इज आस्क्ड हियर. तो हम लोगों को कहा है कि ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है. ओके, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एंड बी? तो क्यों दो फैक्टर दिए? क्योंकि हमको दो इक्वेशन चाहिए टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स. वन इज ए एंड अदर वन इज बी. तो नाइन्थ में हम लोग टू इक्वेशंस टू वेरिएबल करते थे. सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज हियर, राइट? ओके, लेट डिवाइजर इज इक्वल टू 0. लेट डिवाइजर इज इक्वल टू 0. व्हाट इज डिवाइजर? x -2 is equal to 0. Therefore x is equal to 2. Now see carefully. दो सम को कुछ नहीं है. This is like previous 3 sums we have done. वही है, सिर्फ इसमें क्या किया है? तो दो सम को कंबाइन किया. That's it. डरने वाली कोई बात नहीं. Okay. F of 2. Okay. F of 2 is what? 2 cube plus a into 2 square plus b into 2 minus 12. Okay. अच्छा, ये 2 डाला मैंने, right? 2 मतलब क्या? रिमाइंडर. Because x -2 is a factor, so my remainder is 0, right? My remainder is 0. So I'm leaving this part. I'll concentrate on this. 2 cube is 8. 2 into 2 is 4. 4 into 2 is 8. 2 square is 4 into a is 4a plus 2b minus 12 is equal to 0. 8 minus 12. Okay, let me first write 4a plus 2b. 8 minus 12 minus 4 is equal to 0. Now what am I doing is I am dividing each term by 2. I am dividing each term by 2. Right? So what is my answer?
So what is my answer? So 2 into 2 is 4 and 2 and 2 get cancelled. So B, 2 into 2 is 4 minus 2 is equal to 0. Look here. Okay, I can get the value of B now. Therefore, B is equal to what? Minus 2 goes that side, becomes plus 2. Plus 2A goes that side, become minus 2A. This is my first equation. Okay, I'll come back to this equation. ये जरूरत पड़ेगा हमको. Okay. Now we will solve the next part. Should I use this color? Okay, again, let second divisor is equal to 0. दो divisor. I hope you can see this color, right? Let me check, is it clearly visible? Okay, let divisor is equal to 0. Therefore, x plus 3 is equal to 0. Therefore, x is equal to what? Minus 3. चलो white color use करता हो तो ये black board पर अच्छी तरह से दिखाई देगा. Therefore, what? Therefore, what? As soon as I write this as minus 3, f of minus 3, okay? अब ये polynomial नहीं है, अब ये क्या है? Remainder है. Okay, what is this now? This is remainder. So f of minus 3 is what? Okay, x का cube means minus 3 का cube plus a into x square means minus 3 का square plus b into minus x which means minus 3. Okay, I don't have space, so I'll continue here. Minus 12. Okay, minus 12 and मैंने minus 3 लिखा है f of minus 3, तो इसका मतलब होता है remainder is 0 because x plus 3 is a factor of a given expression, right? So now what? Minus 3 ka cube is minus 27. 3 ka cube is 27. Whenever you have odd power like 1, 3, 5, 7, 9, तो आंसर नेगेटिव होगा. बट अगर इवन का पावर जो होगा वो होगा इवन नंबर, then your answer will be positive. Minus 3 का square is plus 9 into a is 9a plus in plus b into minus 3 is minus 3b minus 12 is equal to 0. So minus 27 minus 12, is it minus 39? Let me write this. 3a 9a minus 3b and minus 39 is equal to 0. Each term is divisible by 3, तो मैं सबको 3 से divide करता हूँ. What am I getting now? I am getting 3 into 3 is a, 3a minus b minus 13 is equal to 0. Okay, यहाँ पर है minus b. Okay, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. Okay, थोड़ी देर पहले b का वैल्यू मिला था 2 minus 2a. Okay, whenever you have a minus sign you have to be extra alert. Please remember minus sign extra alert. क्यों? क्योंकि माइनस साइन से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइंस चेंज होंगे. पॉजिटिव 2 विल बिकम नेगेटिव 2, minus 2a becomes plus 2a, minus 13 is equal to 0. स्टूडेंट्स लोग मुझे बताते हैं सर सिली मिस्टेक किया, ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइज चेंज नहीं किया. आई डोंट कंसीडर दिस टू बी अ सिली मिस्टेक. ओके, जब भी नेगेटिव रहेगा यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट. मिस्टेक होने ही नहीं देना है. दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज क्राइम. ओके, माइनस अगर आएगा और आप अलर्ट नहीं रहोगे तो यू आर बाउंड टू गो रॉन्ग. सी वी आर अबाउट टू गेट द आंसर. 3a plus 2a is 5a. Minus 2 minus 13 is minus 15 is equal to 0. Therefore, 5a minus 15 goes that side, becomes plus 15, dividing both sides by 5. Therefore, a is equal to what? A is equal to 3. So, my first answer, a is equal to 3. I want the value of b. Okay, I want the value of b. कौन सा कलर लूं? चलो ये लेता हूं. What is b equal to? Okay, can't see this color. Okay. What is b equal to? B is equal to 2 minus 2a. Just now I got a as 3. So 2 minus 6, which is equal to minus 4. Okay. So if I want to write my final answer is a is equal to 3 and b is equal to what? Minus 4. Right?
Just go through this sum. I'll put the entire sum on a screen. If you have any doubt, you can let me know. Any doubt, you can let me know. Fine. Yes. Can we continue? Can we move on to next sum? चलो कौन कौन है? Who's attending the class? Let me check. Yes, Shlok Shetty, Elon Musk, Dia Gaude. Okay, are other students there or disappeared? Okay, fine. Okay, let us continue next sum, which is sum number 5. We are coming towards the important question, right? Find the remainder. Okay, now this is slightly different. We have to find a remainder. I told you that I have taken all different kinds of questions. We have to find remainder. What is remainder? बहुत easy question है. Remainder theorem. What is a catch now? Okay, f of x, my polynomial, is 4x cube plus 4x square minus 27x plus 6. Okay, but divisor is this. Okay, ये divisor है, right? And this is what? This is dividend. F of x is dividend. Okay, and 2x minus 3 is my divisor. How do I start? I start, let the divisor is equal to 0. Let divisor is equal to 0. Therefore 2x minus 3 is equal to 0. Minus 3 वहाँ चले गया, बन गया plus 3. Then cross multiplication x is what? 3/2. Now जैसे ही मैं x की जगह ये वैल्यू डालूंगा 3/2, बस ये किस लिए क्वेश्चन लिया है कि इन मोस्ट ऑफ द सम यहाँ पर हमको इंटीजर मिलता है, बट फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग व्हाट? फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन के लिए ये डिफरेंट सम है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज सेम. ओके, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही आप लोग इसका वैल्यू डालते हो x का, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिमाइंडर, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? जहां जहां x दिखाई दे रहा है वी विल पुट 3/2. x क्यूब, सो 3/2, 3/2 एंड 3/2. यस, यू हैव गेस्ड इट राइट. 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि क्यूब है. प्लस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2, तो 3/2 2 बार. minus 27x, so 3/2 only once, plus 6. Okay, and remainder I have to find out. उन्होंने फैक्टर है नहीं है कुछ नहीं बताया. अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो g of x f of x का फैक्टर होगा, लेकिन यह फैक्टर के बारे में नहीं है. दिस क्वेश्चन इज अबाउट रिमाइंडर. आई हैव टू फाइंड आउट अ रिमाइंडर. सो व्हाट इज रिमाइंडर? सो 4 and 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट हुआ. 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27. So answer is 27/2. अगेन फॉर बॉड मास, हाँ बॉड मास पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है. ओके, ऐड बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करना है, ऐड सब्ट्रैक्शन बाद में. विच रूल? बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ओके, सो पहले डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट हम कर रहे हैं पहले. ओके, सो 4 and 4 cancelled, so this is what? plus 9. Now what? There is no cancellation, not possible. 27 into 3, is it 81/2 plus 6? Okay, should I continue here? Chalo, let me continue here with yellow color. Fine. What are we doing? We are doing chapter remainder and factor theorem. Okay, ICSE class 10, subject is mathematics. Fine. So 9 plus 16 is what? 15. 9 plus 6 is 15. Now 27 upon 2 minus 80, 81 upon 2. Okay, so 2 को लिया common. And what is this? 27 minus 81. Okay, plus 27 upon 2 minus 81 upon 2. 2 is common. No denominator, so I am taking this as a cross multiplication. और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सो 2 आया यहाँ, 15 into 2 is 30.
माइनस 81 प्लस 27 हाउ मच? सो नेगेटिव आएगा, बड़ा नंबर है 81, साइन इज नेगेटिव. सो 7 11 minus 7 is 4 and it is 54, right? It is 54. That means 30 minus 54 is what? Minus 24 upon 2. कट किया तो आ गया 12. That means remainder is 12. Okay, remainder का वैल्यू है 12. Are you getting it? Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? Let me know. Let me know. Okay. Yes. See how we have dealt. Please be careful कि fraction से हमने deal कैसे किया है. That is important. Okay. Any doubt? Let me know. Any doubt? Let me know. Correct? हाँ, -12 आया, -12. Remainder is -12. Okay, is equal to -12. Fine. Right? Okay, let's move on to next question. Okay, let's move on to next question. Okay, ये तो एक ही पेज है. Let's move on to next question. That is question number 6. Right? Question number 6. Okay, no doubt, no doubt. Okay, fine. चलो अब जरा ध्यान देना है. ओके, बिकॉज दीज ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है, 6 7 8, दे आर PYQs. अगर लास्ट 5 इयर्स के PYQ मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, तो ICSE मैथ्स चैप्टर इज रिमाइंडर एंड थियरम. अगर आप पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड. जरा ध्यान से देखना. ओके, now my in this question my f of x is what? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सो जरा ध्यान से देखना है. एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 45. ओके, जरा देखो हाउ दिस इज डिफरेंट. जैसे ही मैं डिवाइजर लिखूंगा, दिस इज डिविडेंड. एज सुन एज आई राइट माय डिवाइजर यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज डिफरेंट. तो ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल. ओके, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके तीन तीन फैक्टर होंगे. अगर फैक्टराइज करोगे आप लोग इसको तो यू आर गोइंग टू गेट 3 फैक्टर्स. ओके, तो फैक्टर्स तो नहीं, शायद अगले क्वेश्चन में फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. बट हमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. we have to find out value of two variable, one is a and one is b. दो वेरिएबल मतलब हमको दो इक्वेशन चाहिए, दो लीनियर इक्वेशन. and it is divisible by what? It is divisible by what? This value. Okay, so g of x is what? Okay, so you must have understood. यहाँ पर जो है हर बार डिवाइजर जो होता है उसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है, बट दिस इज व्हाट? क्वाड्रेटिक. This is what? Quadratic expression. Highest degree is 2x square plus 4x minus 5. तो क्या हमारा सॉल्व करने का मेथड चेंज होगा? बिल्कुल नहीं. मेथड विल नॉट चेंज. मेथड विल नॉट चेंज. मेथड विल रिमेन सेम. See, I am starting in a same manner. Divisor is equal to 0. What is my divisor? G of x. So x square plus 4x minus 5 is equal to 0. Right? So quadratic expression बन गया quadratic equation. So we know how to split the middle term. तो मिडल टर्म में है +4 एंड दिस 1 इंटू -5. कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लेंगे? 1. सो 1 इंटू -5 इज -5. तो ऐड करने पर आना चाहिए +4 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -5. करेक्ट. वेन एवर यू हैव कंसेक्यूटिव नंबर्स तो मोस्ट प्रोबेबली 1 होता है एक फैक्टर. ओके, so what? +5 minus 1. +5 minus 1 is +4. And when you multiply +5 into -1, what you get is -5. I hope you are getting this, right? ये 1 को कर देता हूँ cancel, right? So x, should I write it directly? One factor is +5 and other one is -1. You can write it directly only when x square के साथ coefficient 1 होगा तो. बट यू कैन नॉट राइट इट डायरेक्टली अगर इसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ होगा तो. राइट, सो दीज आर टू फैक्टर. तो अब ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सम सॉल्व किया है. सो वी हैव टू फैक्टर्स. ओके, वी हैव टू फैक्टर्स. तो इसी को हम लोग यूज करेंगे. ओके,
तो I will write let divisor is equal to 0, मतलब पहले x plus 5 is equal to 0. Later on I'll take x minus y is equal to 0. Therefore x is equal to minus 5. Let me find out remainder f of minus 5. हाँ, तो ये जो f जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है सब जगह आएगा -5. -5 का क्यूब प्लस a इंटू -5 का स्क्वायर प्लस b इंटू -5 -45 is equal to 0. Am I allowed to write equal to 0? तो आंसर इज yes, क्योंकि ये इसको completely divide करता है. If you read this question, it is given that this polynomial, okay, ये इसको completely divide करता है. Okay, so completely, so remainder is 0. Therefore 5 का क्यूब इज 25, पावर इज 3, ऑड नंबर तो नेगेटिव. -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, साइन इज ओके माइनस, और पावर जो है वो इवन नंबर है तो आ गया +25a प्लस b इंटू -5 इज -5b -45 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर व्हाट 25a minus 5b minus 125 minus 1 minus 45, is it -170? Yes, na, is equal to 0. Now dividing each term by 5, dividing each term by 5. See, I am not going to change my method. सारे sum को I'll try to keep same method so that you all are not confused. तो मुझे क्या मिल रहा है? Equation 1, I am getting equation 1 as what? 5 into 5 is 25 minus b minus 5 into 3 is 15. 5 into 4, is it 34? Yes. Minus 34 is equal to 0. Minus b को मैं वहां लेकर जाता हूं. Right? And what I will get? I'll erase this part. Okay, because I need space to solve this sum. तो क्या था? b का वैल्यू क्या आया? 5a minus 34 is equal to b. Therefore 5a minus 34 is equal to b. This is my equation number 1. आगे चलकर मुझे काम में आएगा. Okay, are you following this? Okay, Lavanya Nanda Kumar, she is ready with her answer, right? Is it fine? Is it okay? Right? Let us continue now. दूसरा क्या है? x minus 1. तो I am writing, I'll change the color. Let x minus 1 is equal to 0. Therefore, x is equal to 1 plus 1. Now new remainder, f of 1. Value of x is 1. तो जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है, I'll use 1. Use a bracket, 1 square plus b into 1 minus 45. तो ये फैक्टर ही है x minus 1, तो रिमाइंडर विल बी 0. 1 का क्यूब इज 1 प्लस a plus b minus 45 is equal to 0. Therefore a plus b का वैल्यू है 5a minus 34. 1 minus 45 is minus 44 is equal to 0. Okay, ये b का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया. 1 minus 45 is minus 44. a as it is, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट. a plus 5a is 6a. कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है. Minus 10a is equal to 0. Yeah, कुछ that's why I was worried here. Okay, where we have gone wrong? Where have we gone wrong here? Some multiplication division. 5 का cube is 125 and minus 5 minus 125 plus 25a minus 5b minus 45. Have I used correct question? X cube plus ax square plus bx minus 45, x square plus 4x. Okay, fine. Substitution. Let me use the entire page on the screen. Okay.
Entire page on the screen. Minus 125, 25a plus 5 minus 5b minus 45. Minus 125 a minus 5b 120 minus 170. This should be 36 or what? 15. 5 into 3 is 15. 5 into 4 is 20. Is it correct? What equation? 6a minus 78. Where is 6a? Oh, how 78? Okay. Not 10. Correct. Yes. Okay. Wait. हाँ राइट ही है हम लोग. ओके, a plus 5a minus 34. Yes, I was adding here. Minus 44 is equal to 0. Correct. So this is 6a minus 78. Okay, is equal to 0. Therefore, 6a is equal to 78. Dividing both sides by 6. So a is equal to what? 6 into 1, 6 into 3. A is equal to 3. Yes, we were right. Only mistake we did was, okay, I was subtracting here instead of adding. Minus become plus. Yes, Lavanya Nandkumar, thank you very much. Okay, so we have got the value of a. अब हमको चाहिए b का value. तो what is b? B is equal to 5a minus 34. Okay, b is equal to 5a minus 34. I'll use, okay, ये वाला color. From 1, b is equal to what? 5a. 5 into 13 minus what? Minus क्या था? 5a minus 34. Minus 34. So 13 into 5 is 65. Minus 34. Is it b equal to? Therefore, b, 5 minus 4 is 1. B is equal to what? Is equal to 31. A is equal to 13 and B is equal to 31. Fine. Okay, yes. Are you getting it? I hope you all are sitting with your proper notebook and pen, right? Chalo. Once again, Lavanya, thank you very much. Fine. Let's move on to 7th question. Okay, ये जरा question अच्छे से करना. The expression, now look here, this expression, I will take this expression as f of x. As f of x. F of x is what? 4x cube minus bx square plus x minus c. Now remainder is 0 when you divide it by x plus 1. And remainder is 30 when you divide it by 2x minus 3. Okay. So not both the remainders are 0. एक 0 है और दूसरा 2x minus 3 है. Okay. So we'll solve this step by step. तो पहले तो हम लोग इस रिमाइंडर को लेते हैं x plus 1 को. Let x plus 1 is equal to 0. Okay. This is divisor. So x is equal to minus 1. f of minus 1. Okay, इसी का मतलब होता है रिमाइंडर. When you divide it by x plus 1, remainder is 0. So this is 0. अब क्या करेंगे? जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है, we will substitute minus 1. Minus 1. Be very careful. Minus 1. Okay, so 0. Minus 1 cube is minus 1 into 4 is minus 4. ये plus 1 आया, minus b. 1 into minus b. Okay. Then this is what? Minus 1 minus c is equal to 0. So minus 1 minus 4 is minus 5. वहां जाकर बन गया plus 5. And what I'll do is, एक मिनट, we'll frame a equation, right? We will frame the equation. माइनस बी को उधर लेकर जाते हैं, बन जाएगा प्लस बी. And minus 1 minus 1 minus 5 minus 4 minus 1 is minus 5 और यहाँ बचा minus c. Okay, this is equation number 1, just like the previous one. Now look carefully here. Look carefully. अब लेते हैं हमारा divisor. Let 2x minus 3 is equal to 0. Therefore 2x is equal to 3.
Therefore, x is equal to 3 by 2. Okay. When I take this as my divisor, my remainder is 30. Therefore, f of what? 3 by 2, positive 3 by 2. Okay, remainder is what? 30. तो अब जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है, सब्सटीट्यूट 3 by 2. Okay, 4 into 3 by 2 into 3 by 2 into 3 by 2. Yes, क्यूब है तो इसलिए 3 by 2 thrice minus b into x square. So 3 by 2 into 3 by 2 twice plus x plus 3 by 2 minus c equal to 0. Correct? So 4 and 4 cancel. थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ सॉल्व किया था. 3 into 3 is 9. 9 into 3 is 27 by 2. 3 into 3 is 9. 27. B 3 ना I think square आएगा. नहीं ये प्लस है. Okay, be careful. BODMAS plus. If you want, okay, plus or minus के around bracket डाल दो. Okay. So what here? Here we have to be very careful. Otherwise we will go wrong. 3 into 3 is 9. B upon 4 plus 3 by 2 minus C is equal to 0. Look here what method I am using. Okay, denominator is 2 and 4. LCM of 2 and 4 is 4. So सबको मैं multiply करता हूँ 4 से. Each term I am multiplying by 4. Okay, do this step. आप लोग कभी wrong नहीं जाएंगे. 2 into 2 is 4. 4 4 cut. 2 into 2 is 4. So what you are getting, 27 into 2 is 54 minus 9b plus 6. Be careful, minus 4c is equal to 0. हाँ थोड़े धीरे करेंगे, आराम से करेंगे so that we don't go wrong. 54 plus 6 is 60 minus 9b. I think I have equation for b. b is minus 5 minus c. Minus 4c is equal to 0. See here. See here. हाँ ये b है तो b का वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट किया. हाउ 60? 54 प्लस 6 इज 60 माइनस 9 b का वैल्यू माइनस 4 इज 4 एज इट इज, c एज इट इज और आगे. ओके सो व्हाट एम आई गेटिंग? 60. बी वेरी केयरफुल. अब माइनस 9 इंटू माइनस 5 इज प्लस 45. Minus 9 into minus c will be plus 9c. Minus 4c is equal to 0. Okay, 9c minus 4c is what? 5c. Correct? 60 plus 45 is 105. वो 105 उधर जाकर बन गया minus 105. Isn't it right? Divide by 5 on both sides. So what is value of c? Value of c is negative 5 into 2 is 10, 5 into 1, c is minus 21. Are you all getting same answer? Are you all getting same answer? Okay, is it same? Okay, in spite of being careful, we have gone wrong somewhere. Is it correct? Wait. Oh, this is not 0. Okay, see here, this is not 0. This is 30. 30 into 4 is what? 120. 120. Okay, 30 into 4 is what? 120. 120. Okay, remainder is 30, not 0. Okay, first time remainder was 0 and then remainder is 30, not 3. Okay, so 30. 120. 120. So यहाँ पर आएगा, here we are getting what? Okay, we are getting 5c is equal to 120 minus 105. So 5c is equal to how much? 15. Positive 15. Correct na? Minus. Okay. 5 and 5. So c is equal to 3. C is equal to 3. C is 3. Is it fine now? Let me know. Is it fine now? Okay, C is equal to 3.
राइट ओके, अब बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? b is equal to -5 minus c का वैल्यू 3 है, so it is what? -8. b is equal to -8. Okay, these are two values. C is 3 and b is -8. Okay, b is 3 and -8. Any doubt anywhere? Any doubt? Is it over? Is this sum over? I need some more. Hence factorize it completely. Hence factorize it completely. Okay, 4 marks का क्वेश्चन है. तो दो फैक्टर तो हमको मिले थे यहाँ पर, कि दो मिले थे, एक मिले थे, दो मिले, राइट? नो, वी हैव टू फैक्टराइज दिस completely. Is it fine? Is it fine? Can I continue? Okay. So we have found out value of b. b का वैल्यू कितना आया है? -8. I'll keep this on a full screen. I require some extra space. Okay, b is what? b का वैल्यू मिला -8. Okay, and what is value of c? 3. -8 -8 and c का वैल्यू 3. Okay, so this part is solved, but ये वाला part बचा है. For that I require space. Do I have space? Okay, चलो आगे solve करता हूँ. Should we solve it completely? Okay, चलो ध्यान से देखो कैसे solve करेंगे ये. Okay, I don't have extra page. चलो मैं आगे इधर कंटिन्यू करता हूँ. I'll solve over here. Okay, close. What can I do? Where can I get the board? Can you all see me? I should get extra page. चलो इस पर solve करता हूँ. See there, it's a very long sum. We have to solve it completely. Okay, थोड़ा छोटा करता हूँ. I'll solve on a next page. Let's see what can we do about it. Okay, because I have to factorize it completely. Correct? Now see what is my f of x. ध्यान से देखना, very important. Okay, no panic. I want a blank page. My whiteboard is not working. The app cannot open, close. What is the other way? Okay, on notepad I can solve. Yes. Okay, I'll try to solve it here. I will try to solve it here. I hope everything is fine. Now see, I have a question here. I'll see this question here. Ki my expression f of x was what? Okay, f of x is what? F of x was given as 4x cube. Okay, I'm continuing that sum here. 4x cube minus bx square, right? Plus x minus c. But I have a value of b and c. So 4x cube minus b. Okay, what is value of b? Okay, what is value of b? Value of b was -8. Okay, value of b was -8 x square plus x minus c. What was value of c? Okay, क्या मिला था अभी value of c? 3. तो क्या बन गया f of x? 4x cube minus minus will become plus 8x square, right? Plus x minus 3. अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इफ यू सी क्वेश्चन केयरफुली, तो क्वेश्चन वाज सेइंग दैट इट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. ओके, रिमाइंडर. ओके, क्वेश्चन में हमने पढ़ा था रिमाइंडर इज 0 व्हेन डिवाइडेड बाय व्हाट? व्हेन डिवाइडेड बाय x plus 1. when divided by x plus 1. जरा ध्यान से देखना. ओके, जरा ध्यान से देखना. अब इसके वी नो दैट इसके 3 फैक्टर है. हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो इसके 3 फैक्टर है. एंड दे आर आस्किंग अस टू डिवाइड दिस कंप्लीटली. वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 साल से. सो वेरी इंपॉर्टेंट.
वन फैक्टर आई नो, ये क्वेश्चन में ही दिया था, दैट इज एक्स प्लस वन. वन फैक्टर आई नो दैट इज एक्स प्लस वन. इसका सेकेंड फैक्टर एंड इसका थर्ड फैक्टर मुझे फाइंड करना है. इसका सेकेंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट. तो अब देखो, व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ मेथड ऑफ एक्चुअल डिवीजन. I am going to use the method of actual division. See here, what is my dividend? My dividend is 4x cube plus 8x square plus x minus 3 and dividing. Okay, remainder is 0 when divided by x plus 1. Okay, so x plus 1 is one of the factor. तो मैं सेकेंड फैक्टर जो फाइंड आउट करूंगा इन अ फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट, x मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव यू 4x क्यूब. So 4x square, x into 4x square is 4x cube, 1 into 4x square is 4x square. Division, subtraction, so signs will change. This is what I am doing, actual division. 4x cube minus 4x cube cancel. 8x square minus 4x square is 4x square plus x minus 3. Now this is x. On multiplying this by 4x, I'll get 4x square plus 1 into 4x is 4x. Subtraction. So what is this? Minus and minus. This get cancelled. So this is what? Minus 3x minus 3. X and minus 3x. So this will be what? Minus 3. So minus 3 into x is minus 3x minus 3. Subtraction. So signs will change. On solving this, okay, everything get cancelled. What is happening? On solving this, everything get cancelled and remainder is 0. Okay. So see here now. Now see carefully. See carefully. I will keep on changing the color. Okay. Dividend. जरा ध्यान से देखना. Dividend. What is formula? Divisor into quotient. बराबर plus remainder. Now dividend was 4x cube. इसी को completely factorize करना है. Plus 8x square plus x minus 3 is divisor is what? X plus 1. ये कहाँ से पता चला x plus 1? ये question में ही दिया था. Right? And what is quotient? Quotient is 4x square plus 4x minus 3. Okay? Plus remainder is what? 0. ये 0 को ignore कर सकते हैं. So my first factor is x plus 1 and second factor is what? 4x square plus 4x minus 3. Now I need to solve this. हाँ, जैसे मैंने कहा इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है तो it will have 3 factors. Okay, अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो what? Now see here, which color should I take? चलो brown. Middle term is plus 4. Middle term is what? Plus 4. Add करने पर plus 4 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? Okay, 4 into 3 is what? Minus 12. Minus 12. This we want on multiplication. So tell me three numbers. Tell me three numbers which gives me this. Okay, three numbers which give me this. Two numbers. कौन से नंबर क्या आएंगे फैक्टर? Is it 6 and 2? 6 and 2. I want plus 4. Okay, multiply per minus 2. So my factors are plus 6 and minus 2. Add karo, you will get plus 4. Multiply karo, you will get minus 12. I hope you are thorough with your quadratic equations and factorization wala part. So here I will continue. 4x square, what are the factors? Factors are plus 6x minus 2x minus 3. थोड़ा लंबा सम है. ओके, वहां पर जगह कम पड़ गई, बट यस दिस इज द वे यू कैन सॉल्व इट. कॉमन फैक्टर इज 2x. ओके, इन दोनों में कॉमन निकाला 2x, so 2x plus 3 and what is common? minus 1. So बचा 2x plus 3. माइनस कॉमन निकला तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. ओके, so x plus 1 is my first factor, 2x plus 3 common is my second factor and 2x minus 1 is my third factor. तो ये तीन फैक्टर है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. थोड़ा मैंने हाफ उधर सॉल्व किया है और हाफ इधर किया है. ओके, एनी प्रॉब्लम लेट मी नो. Any problem? Let me know. Is there any problem? Okay. Chats are going very slow.
सो हाफ सम आई हैव सॉल्व्ड हियर. ओके, ए और बी फाइंड आउट करना था तो ये इधर किया. एंड दिस फैक्टर नीडेड टू बी सॉल्व कंप्लीटली. ओके, इसको कंप्लीटली सॉल्व करना था. सो वी हैव डन इट हियर कंप्लीट. सो एक्चुअल डिवीजन से हम लोगों ने ये दो फैक्टर लिया. ओके, एक्चुअल डिवीजन वी डिड x प्लस वन, क्वेश्चन में दिया था. ओके, when divided by x plus 1 remainder is 0, मतलब x plus 1 was one factor. तो उसी को यूज करके हम लोगों ने ये सेकेंड फैक्टर फाइंड आउट किया. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और दो और फैक्टर आ गए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ हाईएस्ट डिग्री 3 एंड वी गॉट दिस three factors. I hope you have understood this. Let me know through chat box. So I'll go on to next sum. Okay, I will go on to next sum. ये क्वेश्चन था राइट. यहाँ एक जगह बॉक्स ब्रैकेट को क्लोज करना था. हाँ, दिस इज अ सॉल्यूशन. यू कैन टेक आउट अ स्नैपशॉट क्योंकि मुझे फिर से जाना पड़ेगा हमारे इस फाइल पर. एंड दिस लास्ट क्वेश्चन. Okay, I'll share this solution also with you in the description box. This is a last question. ये वही है सेम. Okay, but I hope हम लोग छोटा छोटा लिखकर इसको इसी पेज पर कंप्लीट करेंगे. Using remainder theorem, you have to use a remainder theorem. हाँ, remainder theorem, factorize completely, factorize completely. तो पूरे सम में एटलीस्ट एक बार remainder theorem यूज करना. Now listen to me very carefully because this sum is very 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 important. Okay, because this kind of question was asked. Okay, continuously is asked in the examination for 3 consecutive years. जरा ध्यान से देखना. हाईएस्ट डिग्री 3 तो 3 फैक्टर होंगे इसके. 3 फैक्टर होंगे तो 3 में से एटलीस्ट एक तो जो है वो हम लोग रिमाइंडर थियरम से यूज करें, फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो यू हैव टू यूज रिमाइंडर थियरम एटलीस्ट वंस. तो हम लोग एक्चुअल डिवीजन करेंगे और फिर ये आगे करने वाले. ओके, हाउ टू फाइंड आउट फर्स्ट फैक्टर. लिसन हियर केयरफुली, लिसन केयरफुली. अब हम लोग फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जरा ध्यान से सुनना. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है. ओके, सो जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल. अभी कंप्लीट हो जाएगा ये. ओके, वी वांट टू फैक्टराइज दिस यूजिंग अ रिमाइंडर थियरम. राइट, फर्स्ट फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. वी आर गोइंग टू यूज. ओके, मतलब क्या करेंगे, वर्किंग यूज करेंगे. व्हाट वी विल डू इज, हम लोग क्या करने वाले जरा ध्यान से सुनना. क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है चेक करेंगे. ओके, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. देन वी विल चेक क्या x माइनस वन इसका फैक्टर है. देन x प्लस टू, x माइनस टू, x प्लस थ्री, x माइनस थ्री. वी विल चेक इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. हर बार चेक करेंगे. लुक हियर, व्हाट इज f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x. ओके, आई विल राइट इट स्लो. हाँ, और छोटा छोटा लिखूंगा सो दैट वी कवर द एंटायर सम ईयर. काफी लंबा सम है ये. 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 63. सब्सटीट्यूट f एज वन और चेक करके देखो. ओके, वन सब्सटीट्यूट करके देखो. 1 का क्यूब इज 1 इंटू 4 इज 4. 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 7 माइनस 36 इंटू 1 माइनस 63. 1 सब्सटीट्यूट किया, यू डोंट गेट आंसर एज 0, यू डोंट गेट रिमाइंडर एज 0. 1 से चेक करो, देन माइनस 1 से चेक करो. हियर आल्सो यू डोंट गेट एज 0. ओके, बट हाँ, ये आपको चेक करना पड़ेगा. आपको f ऑफ 1 चेक करना पड़ेगा. यू विल नॉट गेट वैल्यू एज 0. f ऑफ माइनस 1 भी चेक करना पड़ेगा. यू विल नॉट गेट एज 0. 2 से भी चेक करना पड़ेगा. एक शॉर्टकट भी बताता हूं मैं, डोंट वरी. इससे भी नहीं मिलेगा. ओके, माइनस 2 से भी नहीं मिलेगा. शायद 3 से मिलेगा. आई एम श्योर 3 से मिलेगा. नंबर देखकर तो पता चल रहा है. ओके, सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग 3. ओके, थोड़ा डिफिकल्ट सम है, इसको फैक्टराइज करना है. बस यही बोला है, फैक्टराइज दिस कंप्लीटली. ओके, मेथड विच आई एम यूजिंग इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके, एरर मेथड भी बोलते हैं इसको. हम लोग चेक कर रहे हैं. 1 से चेक करो, माइनस 1 से, 2 से, माइनस 2 से, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. ओके, अब 3 से चेक करते हैं, यहाँ पर 0 आएगा. ओके, x का क्यूब, वेर एवर यू सी x यू विल सब्सटीट्यूट 3 प्लस 7 इंटू एक्स का स्क्वायर. जहां पर भी x दिखाई दे रहा है सब्सटीट्यूट 3. माइनस 3 इंटू 3 माइनस 63. राइट, तो ये क्या है. ओके, देयरफॉर रिमाइंडर, हाँ, f ऑफ 3. जैसे ही आप x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. 3 क्यूब इज 27. 27 इंटू 4
27 into 4, how much? 27 into 4, 80 and 63, 28, 108, is it? 108, correct? 3 का square is 9, 9 into 7 is what? 63, and 63 into 36 into 3 is 108, minus 63. Okay, look here, plus 108 minus 108 plus 63 minus 63 is equal to 0. Therefore x is equal to 3. I repeat once again, ये डायरेक्टली नहीं आया. वी हैव डन व्हाट? हिट एंड ट्रायल मेथड. आपको 1 लेकर चेक करना पड़ेगा, आपको 2 लेकर चेक करना पड़ेगा, 3 लेकर चेक करना पड़ेगा. ओके, बट जनरली ओके, ये तो मैंने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया प्रैक्टिस के लिए, बट एग्जाम में 1 या 2 में आंसर आ जाता है. एक्स का वैल्यू आइदर 1 - 1 या 2 - 2 होता है. तो आपको फटाफट ये हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है इसको चेक करना है. एनी डाउट लेट मी नो, एनी डाउट. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर क्या हिट एंड ट्रायल मेथड है, ओके, आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. राइट, क्या करना है? एक्स को पहले 1 लेकर चेक करो, -1 2 -2. ओके, तो 3 लेने पर हमको ये आंसर मिल गया, f इज इक्वल टू 3. therefore x minus 3 is equal to 0. करेक्ट ना? ये +3 आकर बन गया x minus 3 is a factor. Okay, is a factor of what? Given expression of f of x. ठीक है, कैसे मिला मुझे? This theorem is called a remainder theorem. इन्होंने क्या कहा? Use a remainder theorem. तो yes, I have used remainder theorem. Okay, but क्या मुझे डायरेक्टली मिला? You have to try check. Okay, 1 -1 2 -2 2 3 -3 से चेक करना है. ओके, जनरली 1 और 2 में आ ही जाता है एग्जाम में. आई हैव टेकन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट एग्जाम्पल 3 वाला. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, ये एक फैक्टर है. दूसरा फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल डू एक्चुअल डिवीजन. ओके, वी विल डू एक्चुअल डिवीजन. अभी थोड़ी देर पहले किया था वो एक्चुअल डिवीजन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स. राइट, तो x - 3 ये मेरा फर्स्ट फैक्टर है, एंड डिवाइजर इज व्हाट? 4x³ प्लस 7x² माइनस 36x माइनस 63. राइट, सो 4x³, x को अगर मैं 4x² से मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट डू आई गेट इज 4x³ माइनस 3 एंड प्लस 4 इज 12x². सब्ट्रैक्शन, सो साइंस विल चेंज. Right, 4x³ cancel. 7 and 12 is what? 19x² minus 36x minus 63. What do I take? Plus 19x. 19x into x is 19x². And 19 into 3 is how much? 9 into 3 is 27, 57. Correct. Subtraction, so sign change. What do I get? This is cancelled. 57 minus 36. 7 minus 6 is 1. 21x minus 63. X plus 21 into x is 21x. Minus 3 into plus 21 is minus 63. So minus and plus cancelled. Remainder is 0. Okay? Remainder is 0. So what am I doing? Yes, yes. इतने जगह में हो जाएगा. Okay? Not like the previous one. ये काफी बड़ा हो गया था. Not like this. Can I minimize this? Yes. Fine. Now what formula do I have? Okay, I'll change the color. I'll take white color. Okay, I know dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Plus remainder, right? You can see here. You can see here. Okay, your dividend divide होने वाला कौन है? तो 4x³ plus 7x² minus 36x minus 63 is what? Divisor. Divisor is x minus 3, my first factor. Second factor is in a form of a quadratic equation, 4x² plus 19x plus 21 plus 0. Remainder is what? 0. 0 को आप लोग इग्नोर कर सकते हो. ओके, don't give much importance to what? 0. Fine. अब आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज माय फर्स्ट फैक्टर विच इज x माइनस 3. हाँ, अब इसको अगेन हमको इसको फैक्टराइज करना है. प्लस 19 इज मिडल टर्म, ऐड करने पर चाहिए प्लस 19, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए? 84.
84, राइट, प्लस 84, एवरीथिंग इज प्लस. सो क्या आएगा, 12 and 7, plus 12 plus 7 is 19, and 12 into 7 is what, 84, correct? So what am I getting, 4x square plus 12x plus 7x plus 21. As I told you, 0 को ignore करते. So this is my first factor. हाँ, 4x common. So क्या बचा है, x plus 3 plus 7 common. So what is left, x plus 3. So here it is my last step. X minus 3 is my first factor, x plus 3 is my second factor, and 4x plus 7 is my third factor. करेक्ट. तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है 3, सो देर आर गोइंग टू बी 3 फैक्टर्स. ओके, 3 फैक्टर. जरा ध्यान से देखना. ओके, ध्यान से देखना. आई जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन. हाउ वी हैव फाउंड आउट फर्स्ट फैक्टर. तो फर्स्ट वाला फैक्टर फाइंड आउट किया हमने बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से. बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से एफ एक्स, एक्स को 1 लेकर देखो, एक्स को -1 लेकर देखो, एक्स को 2 लेकर देखो, -2 लेकर देखो. जनरली बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है 1 और 2 में आपको आंसर आ जाएगा. एंड रिमेंबर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, ये 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है. इट इज वेरी अनलाइकली बट कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. ओके, सो x का वैल्यू 3 है. 3 जब लेते हैं आप लोग तो यू गेट रिमाइंडर एज 0. ओके, सो फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं मिलेगा, यू हैव टू यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरर मेथड. ओके, सो रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3. सो x माइनस 3 इज फैक्टर. तो एक फैक्टर हमको रिमाइंडर थियरम एंड हिट एंड ट्रायल मेथड, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला. आई रिपीट वंस अगेन स्लोली. x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x. ये कैसे मिला, एक तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया. व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, x का वैल्यू 1 लिया, -1 लिया, 2 लिया, -2 लिया, 3 लिया. तो थर्ड फिफ्थ टाइम में हमको मिला रिमाइंडर 0. वो वर्किंग में करना हिट एंड ट्रायल मेथड, यू डोंट हैव टू शो इट हियर. हाँ, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 3. दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम. सो +3 इधर क्या बन गया, -3. ओके, सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर. x माइनस 3 को डिवाइजर लिया, ये डिविडेंट है, तो डिवाइड करके एक्चुअल डिवीजन से हम लोगों ने क्वोशिएंट फाइंड आउट किया. वी नो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिविडेंट. हाँ, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर, ये सब्स्टिट्यूट किया हमने. तो x माइनस 3 इज वन फैक्टर. अदर यू गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रिमाइंडर इज 0, उसको इग्नोर कर सकते हो. ऑन फैक्टराइजिंग एंड सॉल्विंग दिस यू गेट, ओके, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू गेट अदर 2 फैक्टर्स. ओके, तो पहला वाला फैक्टर आपको मिला, पहला वाला आपको फैक्टर मिला हिट एंड ट्रायल मेथड और रिमाइंडर थियरम से. और सेकंड वाला मिला आपको एक्चुअल डिवीजन से. सेकंड वाला एक्चुअल डिवीजन से मिला, बट सेकंड फैक्टर वाज इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको स्प्लिट करके आपको और 2 फैक्टर्स मिले. एंड फाइनली यू हैव ऑल 3 फैक्टर्स. ओके, तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है. ओके, आपके टेक्स्ट बुक से, या यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. दैट्स ऑल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, today's class is over. Let me know if you have any doubt. Let me know. Okay, अगर डाउट है तो पूछना, or else my class is over. Right? चलो, fine. Any doubt? No doubt, sir. Okay, no doubt. Diya, have you understood this chapter? Diya Gaude, have you understood this? Any doubt? Okay, are my other students there? Rajvi, Lavanya, are you there? But sir, this question has only 4 marks, taking a lot of time to finish the sum. Yes, it takes a lot of time to finish this sum. So you have to practice. In maths, okay, remember, in maths, time will always be an issue. Timing will always, you talk to your seniors, those students who have already given the examination, they will always say that, sir, paper was lengthy, paper was, some of the students don't even complete this. So you have to be very fast. अब क्या किया, आप सब लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए मैंने सब कुछ डिटेल में किया. ओके, आई हैव रिटन दिस. लेकिन यहाँ से आप लोग थोड़ा सा फास्ट, क्विकली और थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हैं. ओके, और देखो, एज फार एज वेटेज इज कंसर्न, मार्किंग का वेटेज इज कंसर्न, तो बोर्ड का कुछ फिक्स नहीं होता. ओके,
ये जो है 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मे बी 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे या मे बी 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे. सो ICSE बोर्ड काउंसिल हैज अ habit of confusing us. Okay, any other doubt, let me know. Let me know. Yes, Lavanya, Diya, Shlok, are you there? If you have any doubt, no. Chalo then, let me know. Okay, agar next time what do you want? Physics, chemistry, bio, maths, history. Okay, or if you go to my YouTube channel, YouTube page, okay, you will see recently I have uploaded what history का ये lesson, first war of Indian independence 1857. Tomorrow second part is coming. This was first part. Tomorrow second part is coming. Please see this video. Okay, please see this video. Lot of hard work has been put behind this video. Okay, what are we getting ad? Okay, chalo, I'll skip this ad. Now look at this video. This video is very nice. Lot of graphic and everything has been put in this video. Just go through this. ये पढ़ने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Right? Go through this video carefully. So lot of hard work has been put here. You can see the graphics and everything. I hope you can see it. It will be very easy to understand this. Okay, very easy to understand this. This is Rani Lakshmi Bai fighting here. ठीक है, please go through this. Lavanya, you want a good question bank, okay? If go to description box, there you will get my email ID. You will get my email ID. Just write your name and ask me for a question bank. I will send you a best question bank to solve. No need to solve anything else. I will give you my question bank whereby I have covered all the important questions, okay? Whereby I have covered all the important question. No need to solve anything else. Okay, I'll give you a question bank, a very good question bank. Go to a description box. You will find my email ID. Write a mail to me and I'll send you a link. Right? Fine. Anything else, or should I end my class? Have you understood? Lavanya, have you heard it? Just write a mail to me. Give me your email ID so that or you have, okay, or what you can do. See, this is my number. You can WhatsApp me. Okay, you can WhatsApp me here. I'll send you a question bank. I'll send you a PDF of a question bank. Right? This WhatsApp will be very easy instead of going for mail and everything. Okay, whereby my question bank is divided into 3 sections. First part is like what I do in a class, these kind of questions. Then it will be some question for do it yourself, and then last 10-20 years ke question. No need to do anything else. You can rely totally on that. Fine? Is it fine? Any other doubt? Any other query? If no, then I'm ending this class. Can I end my class? Chalo, bye. Good night to all of you. Good night. Yes, Diya Gaude, Amogus, Lavanya, Ania, Dishita, Rajvi. Chalo, good night. Good night. See you in my next class. If you want any particular lesson, any particular subject, let me know. Chalo, bye. Good night. Good night. Good night. See you in my next class. Bye. Okay. Good night, everyone.